बघा काय झालं? डायरेक्ट गो लाईव्ह केल्यानंतर तो डायरेक्ट तिथे जाईलच का म्हटलं. हो हो, लाईव्ह जाईल. तुम्ही फुडटेकच्या पेजला जाताय ना? हो हो. आता हे ना काही विचारलं नाही पण इथे. हा नाही, तो हल्ली अहो डायरेक्ट नेतो. त्यानं ती प्रोसेस ना मागच्या वेळेला पण मी बघितलं डायरेक्ट केली आहे. ते चेंज करतात ते प्रोसेस साठी. बघा बरं ना. थांबा बघते मी तेच. नाही बघाय का? आलं. मी म्यूट करते मग, कारण लाईव्ह आहे तेच. मॅम मीन वाईज जरा ते पोलचं काय आहे दिसतंय का चेक करा. हे मॅम मी केलं होतं ते बघितलेलं आहे. मी ना तो पोल ऑन केला होता या मीटिंगला की इथे कुठे दिसतं ते बघण्यासाठी.
हॅलो, गुड मॉर्निंग मॅम. गुड मॉर्निंग सुरेखा. असावरी मॅम इज ऑल्सो देअर. असावरी मॅडम आहेत का? आहेत. गुड मॉर्निंग असावरी. गुड मॉर्निंग मॅम. गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग. सुरेखा, हा मॅम. मला थोडं एक तासाभराने जावं लागेल हं, जरा कॉलेजमध्ये जायचं. ओके ओके मॅम, चालेल. काही खास मॅडम, म्हणजे कामानिमित्त? काय झालं? कामानिमित्त कॉलेज? हो, थोडं काम.
ठीक है मैं चेंज करती हूँ. तैयार कर सकते हैं। तो इसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे। सुधाला मेसेज करू का? ती नाही ना जॉईन झाली. नाही मॅम, नाही. करू जॉईन का? मेसेज करू तिला. सांगा जॉईन व्हायला. पार्टिसिपंट्स होऊ देत ना थोडे. 18 झाले तर त्यांना सांगा तोपर्यंत होतं. सेम टूला लिंक पाठवू का? FT सेम टू लिंक मागते जॉईन होण्यासाठी. कोण? इवन सेम 4 पण लिंक मागते जॉईन होण्यासाठी. त्यांना FB वर सांग जॉईन व्हायला ना. FB ला सांगितलंय बट दे आर आस्किंग फॉर लिंक. इफ दिस पीपल आर नॉट जॉईनिंग सो भाग्यश्री तुमचा काय क्लास वगैरे आहे का? नो मॅम. We are on FB live right now.
चालू केलं वैशाली वैशाली
Hello, I'm just facing some Wi-Fi issue, so I'm putting my video off, if that's okay. Just so that. Hello, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm just keeping my video off because my Wi-Fi is slightly down. You are audible, Sudha. Welcome. Hello. I Yes. can't hear anybody, so I'm not sure if you can hear me. Yes, So ma'am, we can hear you. Okay. Okay. Should we start, Sapri ma'am, or Yeah, she has joined. Sabha. Sabah? Sabah, have you joined? She is not in that participation list. Ma'am. Sabha ma'am is not there. Just ask her to join, ma'am. Okay, hold on. Let me call her and call back, ma'am. Okay. Okay. Yeah. Hello, people. Hello, ma'am. How is everybody? We are fine, ma'am. Hello, Sabha madam. Okay. Are we waiting for someone? Hi, Sudha. Are you there?
course. Left the meeting to call you, I think. Hello, welcome, Saba ma'am. Hi, Sabha ma'am. Sudha, you don't have to be so formal with me. Hello. I can't hear you, by the way. Yeah. Hello, can you hear me now? Yes, I can hear you now. Yeah. Yes. Sapre ma'am, can you hear us? Hear us, myself yes. and Saba? Yes, yes, yes. Yes, Sudha ma'am, you are audible. Okay, great. So welcome Saba. Should I start with Saba's introduction because we've already lost a lot of time? Yes, yes, yes. Yeah. Please, I'm sorry about the delay. No problem. Yeah, it's, I can't even start with it, Sudha, let it be. I'll take it separately. No problem. So good morning, everyone. All my fellow SNDT PVPites. It's lovely to host today another great friend, an amazing food stylist, a great professionalist, and a wonderful human being, Saba Ghaziani. I know Saba for, I guess, 20 years or more. Yeah, Yeah, easily. more than 20, 22 years. And We are together old, we Sudha, we are really old people. yes, and together we have done a lot of food shooting for McDonald's. Through my, I think, 15 years odd with McDonald's, all the shoots were done by Saba. I would always insist Saba is going to do the shoot, and we used to work around her timings. For everyone out here, Saba, even 20 years or 25 years back, used to be busy doing shooting almost 28 days a month, every single day. So uska shoot and to get her appointment used to be really tough, but McDonald's used to get special preference and Saba would never say no for our shoot. That's So true. so Saba looks really tiny and small, like a young little girl. You won't guess her age. Saba is a pin-sized revolution in the food and beverage world. India's foremost food stylist. I would say that I think there's nobody like her in whole of India. So we are really, really lucky to have her herself here, giving you tips and sharing her experience on food styling. Saba actually started in 1996. That's the age or that's the year when Domino's and McDonald's both launched their brand in the country. Saba is today on a speed dial of global food major. She makes major ad films. She works with major packaging clients, directs and films, and does tabletop shots as well. She's extremely innovative, and she has an entire new recipe for a lip smacking, ready to eat chutneys and curry brand as well. That's where she's sitting, I guess. That's a production unit in Daman. It's called under the brand as the Chef Cooks. She's a chef herself. She's from Dada Catering College. Falling in love about food is all about senses, is what Saba always says, and she would believe. She loves food. You can see the smile on her face, you know, when I would develop a product and we would sit on some on a pre-shooting discussion. Saba would completely fall in love with the food. She will taste, "Arey badhiya yaar, mast hai yaar, superb hai." She would literally be in love with that. She says or believes that way before you smell it, touch it, or taste it, just the look of it approaches you, makes you salivate, and thus you cannot resist submitting yourself to this flavorsome, beautiful food. And hence, food imagery is so irresistible that a viewer, that anybody who looks at it is convinced कि मुझे तो ये खाना ही है, मुझे तो इसको छूना ही है. I have to feel that food. And that's where Saba comes in. She makes the food so irresistible that you want to go and have a bite on that food, which is why most food industry want her to do the food styling. Saba, I would add, that is very, very innovative. She would think hard wherever she travels and goes. She will get stuff to make her styling even more better. She would never compromise. I remember days when एक burger को shoot करना, and if she's not happy, she keep doing it and keep doing it. She's like, till she's satisfied that this is the best product. An alumnus from IHM Mumbai,
that's the other catering college. Sabha set up Food Photographics India, only dedicated food photography studio in 2004. This is her canvas, a favorite retreat. She loves her studio, I know. And she would often tell me that, Sudha, tu aana chahiye ek baar mere studio mein. It's just phenomenal. I'm sure it will be. One day I will. When you can't reach her on the phone, just walk up to this rustic cottage in Mumbai's Aram Nagar, the back door, or it is the front, whatever it is, but it's always unlocked for everyone. And there's always a buzz inside, yet there is a sense of serenity, of positivity, ingenuity that engulfs your senses and makes you a part of food journey. Isn't she phenomenal, guys? Just the way she will now take the session for all of you, you will see and you will hear, and it's sad that she can't do a physical class. Otherwise, I'm sure she would be happy to come to PVP and Juhu and take a live class. She would have completely loved it. Similarly, the food industry love Sabha. Indian ad world, the advertisement world, most ads, I remember jab Tata Sky was on, and those days Tata Sky ka first shot would be these food shots. I called up Sabha and I said, Sabha, because her work talks for herself. And Sabha is like, तूने photo देख के पहचान लिया कि मैंने shoot किया है? It's like nobody can do it as well. Sabha, you don't remember it, but this was like initial years. Of Really, so many years back, Sudha, you still remember? Yeah. Indian ad world most loved and wanted. Almost every third food image that you see. Okay, Sudha, too much of pressure. Print ads, digital ads, hoardings, packaging, every third one that you see, okay, that is either styled or even shot by the Sabha Ghaziani. So over to you, Sabha. It's an absolute pleasure to introduce you today. And I seriously, personally loved working with you. And even in this international stint with Papa John's and the shoot that I go in London or Dubai, I often talk about you and I often tell them that nobody is as good as you. So over to you. Thank you. Whew. Too much of pressure, Sudha. Too much of pressure. Guys, सब चोकरी है यहाँ पे. Or are we any boys? None. All girls. They're all girl gang. सब गुलाब gang यहाँ पर आ गई है. Okay. I don't know whether you are aware of this profession called food styling, food photography, a specialization of styling and photography. How many of you are aware of it? Like, पता है किसी को? I don't know. How is one supposed to reply on this, Sudha? Will they reply or will they? I guess they will. You can write in a chat. Yeah. Yes. Even they can raise their hand if they know. Raise their hand or put those Yes, ma'am. I knew like a little bit. I knew about it, but not in depth. Okay. But what do you know about food? Like, you know about food photography? You know about styling? What is it that you know about? Food photography. अच्छा. करते क्या है? What is it? Like it's like the posters we make, the hoardings we make, the leaflets, the menu cards. They like suppose market में अगर कोई नया प्रोडक्ट आया, so उसको मार्केटिंग करने के लिए जो लीफलेट्स बनाते हैं, जो होर्डिंग्स के लिए जो फोटोज एंड ऑल खींचते हैं, that's I guess photography, food photography. Okay, one big point आप miss कर गए, and that is packaging, food packaging. आप किसी मॉल में जाते हो, you go shopping for food, वहाँ पर कितने सारे पैक्स होते हैं, हर एक पैक पे एक फोटो होता है. Yes, yes. Yeah, that food photo. So I'm right now sitting in my studio, and this is where we shoot. Okay, और यहाँ most of the times पूरा food को बनाया जाता है, recreate किया जाता है as per the client specifications and whatever, and accordingly उसको फिर
स्टाइल करके, डिजाइन एजेंसीज के साथ में कोऑर्डिनेट करके, आप जैसे फूड टेक्स के साथ में कोऑर्डिनेट करके, सुधा के साथ में लड़ाई करके हम लोग उसके बाद में उसकी फोटोग्राफी करते हैं, जो कि पैकेजिंग पे यूजुअली जाता है. A lot of it goes on the final pack, final image, the food that they are going to sell. So I always tell my clients that the first sale of your product, I guarantee with my food shop. The repeat sale happens because of the taste. And that is your lookout. वो फूड को टेस्टी बनाना वो आपका काम है, वो फूड को गुड लुकिंग बनाना मेरा काम है, मैं करती रहती हूँ. बट उसके पीछे what you guys do when you develop recipes, you work like days, months. I know some people even have worked on a single project for years, and then you develop a particular product, you come up with it, आप टेस्टिंग कराते हो, आप उसको स्केल अप करते हो, आप उसके बाद में उसको टेस्ट लॉन्च करते हो, उसके पहले फूड फोटोग्राफी होती है. सो बेसिकली फूड फोटोग्राफी इज अ वेरी स्मॉल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, ऑफ रेसिपी डेवलपमेंट. आप लोग ज्यादातर रेसिपी डेवलपमेंट करते हैं, राइट? सो फूड फोटोग्राफी इज अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट. इट कम्स ऑल्सो मच लेटर. इतना आपका रेसिपी वंस आपका पूरा हो चुका है, सारा फूड रेडी है, मार्केट में अब लॉन्च करना है, अब लॉन्च करना है तो उसका फेस होना पड़ेगा, कोई उसका कोई एक पैक होना पड़ेगा. और उस वक्त ज्यादातर क्लाइंट्स जो फूड सेल करते हैं वो फूड दिखाते हैं, जो दिखता है ना वही बिकता है. सो आई ऑलवेज से दिस इज द वे इट शुड ऑलवेज बी. it's that. So बेसिकली फूड फोटोग्राफी वो पार्ट है जहाँ पे हम लोग आपकी रेसिपीज को आपके स्पेसिफिकेशंस के जैसा बनाकर शूट करती हूँ, ऐसा. सो दैट इज फूड फोटोग्राफी. अभी फूड स्टाइलिंग क्या होता है? फूड स्टाइलिंग इज आपकी रेसिपी को आपके स्पेसिफिकेशंस के साथ में गुड लुकिंग बनाना. Like hypothetically, if you say, let's say there is a idli picture. सुधा ने या आपने प्राची ने एक इडली का रेसिपी डेवलप किया है, रेडी टू कुक या रेडी टू ईट इडली है वो, और वो हमको शूट करना है. अभी उसका Zoom meeting में आती हूँ. सॉरी, Please put everyone on mute, Vaishali ma'am, if you can. so what happens is, अगर मैं वो एक इडली बनाती हूँ आपके रेसिपी के हिसाब से बना रही हूँ, मे बी ज्यादातर क्या होता है ना, अक्सर आपका जो आइडियल एनवायरनमेंट होता है ना, आइडियल वाटर लेवल, आइडियल टेम्परेचर, कुकिंग, What was that? I think we can hear you now. या सो वो उस तरीके से बनता है ना, नॉर्मली वो अच्छा ही बनता है, आपका बहुत टेस्टी बनता है. बट जब वो आपके R&D लैब से जब वो बाहर आता है और वो घरों में बनाना होता है या मेरे स्टूडियो में बनाना होता है, ऐसा हो सकता है कि वो उतना ज्यादा गुड लुकिंग ना बने. गुड लुकिंग माइंड यू, नॉट टेस्टी. टेस्ट तो फिर भी रहेगा आपका, बट गुड लुकिंग प्रोडक्ट बनाने के लिए फिर हम उसको अपने तरीके से आपके स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करके उसको बनाते हैं. सो अगर हमको 2 इडली शूट करनी है तो हम 20 बनाते हैं, उसमें से 2 बेस्ट लुकिंग शूट करते हैं. इट्स लाइक दैट. एंड दैट्स इट. मतलब कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है इसके अंदर. होटल मैनेजमेंट का डिग्री है तो वो हेल्प करता है कि आप किस तरीके से शॉर्टकट्स निकाल सकते हैं एंड व्हाटएवर, यू नो, ऐसा है. सो इस तरीके से हम लोग करते रहते हैं हमेशा. हम फूड स्टाइलिंग उसी को बोलते हैं. उसके ऊपर थोड़ी गार्निश रखनी है, या इडली है तो केले का पत्ता रखना है. सो यहाँ पे फूड नॉलेज बहुत ज्यादा काम आती है, स्पेशली जो मैंने होटल लाइन में सीखा है कि रीजनल फूड होता है, तो वो रीजनल फूड किस तरीके से, कौन से रीजन का फूड किस तरीके से सर्व होता है, उसका वेसल कैसा होता है, लाइक ब्रास, कॉपर, सिल्वर, टेराकोटा या वुडन बोल है या व्हाटएवर, वो पूरा का पूरा जो है एक गैमेट बन जाता है, एक फॉर्मूला बनता है. एक्सक्यूज मी.
और वो फॉर्मूले के हिसाब से फिर हम उसको बनाकर उसको शूट करते हैं। इसमें एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि वो मेरे क्लाइंट को कैसा देखना है। मुझे जैसा देखना है मैं तो कर सकती हूँ, बट बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट्स को भी एक तरीका होता है, उनको उस तरीके से ही देखना होता है। वो सब चीजें वो कैसे देख रहे हैं उस चीज को, वो बहुत जरूरी होता है कि उनका जो उनके दिमाग में है वो मुझे उनके सामने लाना है, और उनको भी नहीं पता उनके दिमाग में क्या है। सो इट्स वेरी एक ब्रीफ होता है, किसी भी फोटोग्राफी का एक ब्रीफ बनता है। वो ब्रीफ के हिसाब से जब शूट होती है ना तो वो फिर परफेक्ट बनती है। उसमें ज्यादा कुछ इश्यूज नहीं आ जाते हैं। इश्यूज आते भी हैं तो क्लाइंट्स प्रेजेंट होते हैं, डिजाइन एजेंसीज प्रेजेंट होती हैं, उनके साथ में डिस्कस करके पूरा जॉब किया जाता है। भी आप बोलोगे मैं खाली क्लाइंट्स का ही काम करती हूँ, या ज्यादातर कमीशन जॉब्स ही होता है मेरा। नॉन कमीशन जॉब्स जो कि टाइम पास के लिए हम लोग करते हैं, थोड़ा मस्ती करते हैं, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, थोड़ा नया कुछ करते हैं, वैसा ना ज्यादातर खाली लॉकडाउन में पॉसिबल है जब क्लाइंट का काम नहीं आता। इट्स लाइक दैट, बट अदर देन दैट यूजुअली ये हमारा इस तरीके से फूड फोटोग्राफी और स्टाइलिंग होता है। आपको कुछ सवाल पूछना है मुझसे? you have any questions up until here, then I can show you some images and we can talk about them and how it was done and whatever. I guess they are still trying to figure out what is food photography and how is it done. I mean, I guess most people feel कि food को ऐसे ही लाके रख दिया और फोटो निकाल लिया और फोटोग्राफर ऐसा नहीं होता। हाँ। फोटो टेकआउटर, वो तो फोटो टेकआउटर हो गया। They will be able to get Hello, ma'am. Good morning, ma'am. Hi, Hi, ma'am. Maitri here this side. Maitri. Ma'am, when did you thought that you will be a photographer, that too a food photographer? Like, when did you thought about it? Like, how was that feeling that like food hai, so like let's start photographing and make it into a profession? कोई लाइफ होती है ना, लाइफ, इट्स लाइफ, यू गो विद द फ्लो। I did not start off, I did not study hotel management to do food styling. I wanted to be a chef. उसके बाद में वो, उसके बाद में life happened. So it's just, I just went with the flow. I got a call and I did my first job while I was still in the hotel. Then I quit the hotel and I realized, but बहुत आसानी से मैं बोल गई ये quit the hotel and all, but वो 3 साल लगा मुझे वो होटल का जॉब छोड़ते छोड़ते and got into food styling. फूड स्टाइलिंग करते करते ऐसा लग रहा था कि आई कैन शूट, क्योंकि वो जो सामने बंदा शूट कर रहा है वो उस तरीके से वो क्या होता है ना, इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड फील्ड मैत्री, बिकॉज इतना ज्यादा स्पेशलाइजेशन है। आप अगर एक फूड फोटोग्राफर हो ना तो आपको फूड की जानकारी होना बहुत जरूरी है। You should know the food what you're shooting. You should know how to light that food. You should know how to present that food. वो चॉपिंग बोर्ड पे शूट करना है कि वो कटोरे में शूट करना है, वॉट प्लेट होगा या बोल होगा या वायर रैक होगा, डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट, बट एवरीथिंग वर्क्स अराउंड दैट, तो food knowledge helped. I got into food styling, I got into food photography, and now here I am talking to you guys about styling and photography. काम मिलता गया, काम लेते गए, आगे बढ़ते गए। ऐसा कभी सोचा नहीं था, किसी को असिस्ट नहीं किया, बस काम कर लिया। ऐसा है, वो सुधा बोलती है ना, वैसे ही एग्जैक्टली बहुत सारा काम किया और कभी किसी काम को ना नहीं बोला। सुधा को तो कभी भी नहीं। इट्स लाइक दैट। Thank you, ma'am. I can do a presentation, Sudha. It's about food photography and styling only. I've just created something. Somebody will have to make me host. Yeah. Ma'am, if we can give the screen share to Sabha, please. Rekha madam will do that. सप्रे मैम आपका आवाज बिल्कुल हाँ, बहुत कम है ना।
मेरा आवाज नहीं आ रहा है? जस्ट Can you hear me now? आ रहा है लेकिन हल्का सा आ रहा है. Okay. क्या मॉलडीव्स में जाके बैठी है सुधा? यस मैम, नाउ यू आर होस्ट, यू कैन शेयर. Okay, great. So I have this. हाँ, फुल स्क्रीन हो गया आपका? Yes, ma'am. यस मैम. So it's about food styling and photography. Food photography and styling, whatever. I generally tend to call style. I generally tend to keep styling first, photography बाद में. A good friend of mine, Sandeep Matre, Sudha, you know Sandeep Matre, right? Yes. He used to always say ना, एक फूड पिक्चर बनाने में 70% काम फूड स्टाइलिस्ट का होता है, 30% काम फोटोग्राफर का होता है. जब तक वो खाना अच्छा बनेगा नहीं, दिखेगा नहीं, शूट नहीं हो पाएगा अच्छे से. It's that. So food photography and sense and styling basically targets your 5 senses throughout. It's like that. It's the same thing as your dine-in experience. मेरा with my photograph मैं आपको वो dine-in experience देती हूँ. With my photograph and with my food making and styling मैं आपको बताती हूँ कि आप अगर खा रहे होते तो उसको वो कैसा दिखता है और उसका क्या टेस्ट होता. जो खाना दिख रहा है वो इतना टेस्टी है कि आपको उसकी टेस्ट की याद आ जाएगी. That is what food photography finally should aim to achieve. कि आपको खाना देखते ही खाने का मन करना चाहिए. That's important. तभी आप जीत गए. So basically that's the whole at least that is my principle. मैं वो समझती हूँ कि अगर मैंने किसी को कुछ करी दिखाया या बर्गर या पिज्जा दिखाया तो वो इतना टेस्टी दिखता है कि सामने वाला बोलेगा यार पिज्जा ऑर्डर करना पड़ेगा अभी तो ये देखकर. It's like that. So that is what food photography and styling is about. It's about the 5 senses. You see, you smell, you touch, you taste, and the umami flavors. All this experience, if you can give by one photograph, तो हो गया. Job's done, I would say. I'll show you some where visibility is very important. So when you go into visual treat of a food image, what is important is for you to know कि वो food जब तक मैंने शूट नहीं किया था, जब तक मैंने बनाया नहीं था, वो दिखता कैसा है. बिरयानी दिखनी कैसी चाहिए या चिकन करी, how should a chicken curry look? So as a food tech, if you have developed your chicken curry, you know what your chicken curry should look like, correct? And that is what you need to get it out in the bowl, in the photograph. That is the whole idea. There are lots of themes जो हम follow करते हैं कि कभी उसके साथ में accompaniment रख दिया तो नान रख दिया, कभी हम उसके साथ में spice रख सकते हैं, कभी dark background पे shoot करते हैं, कभी हम उसको ऐसे ब्राइट बैकग्राउंड पे भी शूट कर लेते हैं. सो ऐसा जरूरी नहीं है कि बैकग्राउंड डार्क ही होना चाहिए या ब्राइट ही होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. जरूरी ये है कि खाना अच्छा दिखे. इट्स लाइक दैट. लाइक अभी अगर आप ये पोहा देखोगे यहाँ पर, ये पोहे में टूटा मैश्ड भुक्का या सॉगी पोहा नहीं दिखाई देगा. बिकॉज हमारे दिमाग में एक गुड लुकिंग और वेरी टेस्टी पोहा का मतलब क्या होता है? खिला खिला होगा, तेल कम होगा उसके अंदर, मैश नहीं हो जाएगा, वो ऐसे दिखेगा हाथ में हमारे, हम उस पर फिर नींबू डाल के मिर्ची के साथ में उसे खाते हैं. सो वो जो हमारा सेंसरी है जिसमें हमको हमारा दिमाग रिकलेक्ट करता है कि वो पोहा दिखना कैसा चाहिए, वो हमको यहाँ पर रेप्लिकेट करना होता है. इसलिए अभी उसके लिए आपको पोहा बनाकर एक एक दाना चुनना पड़े तो चुनना. It's that is the important thing. यहाँ पर अगर आप देखेंगे, so you've got a lot of things यहाँ which is visible. आपको पता है पिज्जा कैसा दिखता है, आपको पता है नगेट्स, चीज नगेट्स कैसे होंगे. अंदर से खोल के दिखाया है तो आपको मालूम पड़ रहा है कि इसमें चीज है. बाहर से तो वो चिकन भी हो सकता था, वेज भी हो सकता था. It's like that. You remember, Sudha, you remember chicken nuggets अपना? Yes. कितना लड़ाई किए थे अपन ने ना उसके लिए.
The McDonald's chicken like, nuggets, yes. You've used soya in this. I said, she says, no, it's muscle. It's just muscle meat. And I'm like, no, this is not soya meat. Yeah. So that's what it is. अगर हम देखने जाएं, there's another image out here. So अगर हम बासमती राइस शूट कर रहे हैं, बासमती राइस का सबसे एक one point important point क्या होता है? It's long grain, correct? Long grain दिखा दो, जितना white दिखाओगे plain white rice उतना ज्यादा अच्छा, जितना fully पका हुआ दिखेगा उतना अच्छा. Now there are finer nuances होते हैं. कोई बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो चावल को थोड़ा कम पकाते हैं और बोलते हैं कि ये गुड लुकिंग राइस है क्योंकि कम पकाएंगे तो वो चिपकेगा नहीं, राइट? लेकिन कम पका हुआ चावल ना, अगर आप देखोगे ना, सुधा देखेगी ना, उसको पता चल जाएगा ये कम पका है, उसको पता चल जाएगा चीट हुआ है. लाइक स्पेशली अगर आप बासमती राइस देखो ना, राइस के अंदर ना ऐसे ऐसे रोड़ी होके वो पूरा एक अखा राइस बनता है. तो guys, just give me 1 second, huh? Just give me 1 second. I'm sorry, guys. I had to guide somebody about Covaxin. So, okay. So, I was on rice. Like rice को अगर पूरा अक्खा पका हुआ दिखाना है और वो सूखा नहीं होना चाहिए क्योंकि राइस जब सूख जाता है तो वैसा गोल हो जाता है, कर्ल हो जाता है, करेक्ट? तो वो सब फाइनर डिटेल्स हमको मालूम होनी चाहिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट कि वो फ्रेश राइस कैसे दिखेगा. बहुत सिंपल सी चीज है, सिर्फ चावल है, सिर्फ सफेद चावल है, ना बिरयानी है, ना पुलाव है, ना खिचड़ी है, कुछ नहीं. लेकिन वो राइस दिखना कैसे चाहिए वो आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे दिखेगा जबकि वो जो कि वो अच्छा दिखेगा. That is important. Now when you come out here, now अगर अभी हम यहाँ देख रहे हैं, this is just a very plain plate of soupy noodles. It's just soupy noodles, but यहाँ पे because that juice has got a highlight, because वो ingredients उसके दिखाई दे रहे हैं, noodles का wriggly nature, it's fully cooked noodles, दिखता है fully cooked है वो, soft नजर आ रहा है वो noodles. So what is important in food photography is कि हमारे दिमाग में noodles, soupy noodles is always very soft, soupy, of course, वो नजर आना चाहिए, food shot में वो दिखना चाहिए, in the first look मालूम पड़ना चाहिए. You have to make the food to look what it is supposed to look and shoot it. That is important in food photography. So, as I said, you have to make the food what it's supposed to look. बिरयानी हमारे दिमाग में एक परसेप्शन है बिरयानी कैसी दिखनी चाहिए, मुझे वही बनाना है वापस, कोई रॉकेट साइंस नहीं होता, लेकिन उस तरीके से वो अचीव करना होगा विदाउट एक्चुअली कुकिंग द बिरयानी, विदाउट एक्चुअली हांडी में नहीं बनाऊंगी वो बिरयानी, लेकिन प्लेट में जो सेट होगा वो एग्जैक्टली बिरयानी दिखेगा. दैट इज इम्पोर्टेंट. सो व्हेन यू हैव समथिंग लाइक दैट, यू हैव अ पनीर टिक्का मसाला. तो पनीर टिक्का मसाला में पनीर का टिक्का होता है, ग्रेवी होती है, यू नो सम ऑफ दीज इमेजेस इफ यू सी हियर, दिस वाज वो, ये वो पिल्सबरी है, आपको याद है पिल्सबरी का एक है ना, इट्स दैट कुकी केक, दिस इज दैट प्रोडक्ट ऑफ theirs. Then you have evolution of photography, evolution of food photography. पहले तो हमारे यहाँ पर डिजिटल फोटोग्राफी नहीं था, ये डिजिटल फोटोग्राफी आ गया, मुझे बहुत पसंद है. आई लाइक इट लाइक दिस. हमारे पास बहुत सारा चीजें करने के लिए,
और उसको अनडू करने के लिए। Can people go on mute, please? Yeah, some people are on unmute. Can you please mute everyone? So from analog photography, 100 rupees हाथ में मिल रहा है। Again, somebody is going off. from it, माधुरी। Aishwarya, mute yourself, Aishwarya. Sabha ma'am, can you just make me a host so I will just see and I can just mute them and I will give the share. yes. On my name, there are 3 dots. You can just see. Yeah, just don't transfer the host. You be the host and just share screen. Yes, yes. That should be enough, Surekha. I'm making you a co-host, Surekha. Sorry ma'am. I made you a co-host. Okay. तो back and forth नहीं होगा। ओ इतने सारे और थे वेटिंग रूम में। Yeah, there were a lot. I got a couple of calls saying we are not able to connect. Okay. Yeah. Okay, we can get back. You? Yeah. Can I come back to my screen sharing? Yes. So there we are. We are talking about, I am talking about an evolution of food styling and photography for the last 25 years. Okay, so 25 साल में हम कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं? 25 साल पहले जब हम काम शुरू किए थे एज अ फूड स्टाइलिस्ट, एज अ फोटोग्राफर, हम ना टमाटर के गुलाब बनाकर रखते थे। It's like that. अब वो नहीं होता। Now photography, styling is very real. डिजाइनर्स भी पहले एक्चुअल डिजाइनर्स हुआ करते थे। अभी तो हमारे पास में फोटोशॉप है, सारा डिजाइन फोटोशॉप पे बन जाता है। किसी को दिमाग लगाने की, स्केच करने की, ड्राइंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इट्स लाइक दैट। पहले अभी हम लोग फोटो खींचते हैं, अच्छा नहीं लगा डिलीट कर दिया, नो प्रॉब्लम। पहले हमको वैसा नहीं होता था ना, बिकॉज तब हमारे पास में वो ऑप्शंस नहीं थे। हम पोलराइड खींचते थे, वो पोलराइड पता है आपको, एक मिनट के अंदर वो डेवलप होता है, तो आपको दिखता है कि क्या बन रहा है, क्या शॉट आ रहा है, आपका लाइट करेक्ट है कि नहीं है। Just a minute. Didi, Sushmita, please mute Mute yourself. Mute yourself. Didi and Sushmita. सबा मैम, इसलिए मुझे आप होस्ट कर दो, मैं आपको शेयरिंग का यहाँ से ऑप्शन दे देती हूँ। तो साइड बाय साइड आई विल जस्ट एडमिट द स्टूडेंट आल्सो एंड आई विल टेक केयर ऑफ दिस देयर म्यूट एंड अनम्यूट। Oh my. So where are you now? Dot. Make host. Okay. Now you can share. मुझे बताओ, तुमने क्या किया कि I can share without being a host? I have given multiple participants to be shared simultaneously. That's the option I have just given to you. I am hugely challenged. Okay. So there you go. So the positives of yesteryears was कि हम ज़्यादा मेहनत करते थे. We were all more involved in designing, in the photography, in the making, lighting, setting it up, everything. Right now हमारे यहाँ तो बहुत आसान हो गया है ना कि ये शूट कर दिया है, अच्छा नहीं लगा डिलीट कर दो, कुछ और दूसरा रखकर वापस शूट कर लो. That's one option. Second option is कि शूट करके 15 दिन हो गया, उसके बाद में देखा पसंद नहीं आया, अच्छा ठीक है फोटोशॉप पे उसको चेंज कर दो, उसको ऑल्टर कर दो, उसका पोजीशन अलग अलग शिफ्ट कर दो, whatever. So a lot is now become very machine, how do you say it? It's become it's very dependent on software and hardware. पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ एक ही
हार्डवेयर यहाँ पे अपने दिमाग पे सब कुछ डिपेंड होता था, आपने जो सोचा आपको वो बनाना है. It's like that. That is the major difference between then and now. Now let's see आगे लाइफ में क्या आता है. Like if you see here also, okay, ये सारे फोटोग्राफ्स हैं, एक ही जैसे हैं, सेटअप एकदम सेम है, लेकिन लेआउट सेम है. यू नो व्हाट इज अ लेआउट? अ लेआउट इज आपने मेन डिश कहाँ रखी, उसके साइड में क्या रखा, बैकग्राउंड क्या था, प्लेट था, बोल था, प्लेट में रखा के, बोल में रखा के, बोर्ड पे रखा के, कहाँ रखा, पीछे की वॉल दिखती है कि नहीं दिखती है, कितना स्कोप है, ट्रेडिशनल लेआउट बनाया या कंटेम्प्रेरी लेआउट बनाया, ब्लैक रखा कि ब्राइट लाइटिंग रखा. दैट इज ऑल कंट्रीब्यूटिंग टू अ लेआउट. हाउ डू यू ले द फूड ऑन द टेबल? इट्स लाइक दैट. So that is what was there. इस तरीके से लेआउट्स बनते थे. Now negatives of yesteryears, ये बड़ी तकलीफदायक था. एक रेड कैप्सिकम, एक सिंगल रेड कैप्सिकम मैं उन दिनों 250 रुपए का खरीदती थी. फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंगल कैप्सिकम 250 रुपए का आज भी नहीं होता बॉस. प्लस 250 रुपया उन दिनों उसकी औकात बहुत ज्यादा थी. You getting me? Plus, because ingredients मिल नहीं पाते थे हम हमारे को, we would be struggling. ब्रोकली कहाँ से लाऊं, avocado क्या होता है, मशरूम तक तो ढंग का नहीं मिलता था यार, प्याज लाल नहीं मिलती थी, टमाटर गोल नहीं मिलते हैं. You know what I mean? बेसिक है एकदम, नहीं होते थे उन दिनों, तो वो ढूंढना पड़ता था. द होल नॉन अवेलेबिलिटी, सीजनल है, इम्पोर्ट नहीं हुआ, ब्ला ब्ला, सब गड़बड़ होती थी, जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीटिंग करते थे. आम नहीं मिला, सीजन नहीं है, आम ही नहीं मिला, पपाया को क्यूब्स बनाकर आम के सब जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, थिंग्स लाइक दैट. सो चीट्स ज्यादा थी पहले, ट्रिक्स ज्यादा यूज करनी पड़ती थी. अभी तो वो प्रॉब्लम होता ही नहीं है. इट्स लाइक ओल्ड फैशन आउटलुक था बहुत ज्यादा, हर चीज को एक ही एंगल से देखना. ऐसा आपने टेबल पर, अपने डाइनिंग टेबल पर जैसे रख के उसको देखा, हर खाना वैसे ही देखेंगे. क्यों, क्या जरूरी है? खाना उस तरीके से देखो जिस तरीके से वो फूड अच्छा लगे. टॉप एंगल में अच्छा लगता है तो टॉप एंगल में देखो, 60 डिग्री पे अच्छा लगता है तो उस तरीके से देखो, आई लेवल पे वो ज्यादा अच्छा दिखेगा तो उस तरीके से देखो, या एटलीस्ट ट्राई तो करो. यहाँ पर मैं वही बोल रही हूँ, रेपिटेटिव डिजाइन होती थी, बिकॉज वो एक ही तरीके से हमने देखना सीखा है, उसी को हो जाता था. इंटरनेशनल वर्क हमारे पास में दिखने को नहीं था. अभी तो आपके पास में कितना ओपन है, आप नॉलेज इज जस्ट सो फ्रीली अवेलेबल ऑल ओवर द प्लेस. आप देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो, आप उससे इंस्पिरेशन ले सकते हो, बेसिकली कॉपी कर सकते हो, बट बहुत कुछ कर सकते हैं हम अभी, बिकॉज यू गॉट गूगल, यू गॉट द एंटायर इंटरनेट, यूट्यूब, द एंटायर सोशल मीडिया, एवरीथिंग. सो इट हेल्प्स द के these are the negatives. ये सब थे, but अभी it is better because you have ingredients, you don't have to cheat, you have a lot of international exposure, you can design the way you want to design, referencing के लिए बहुत कुछ मिल जाता है content हमको. So we are good to go that way. आजकल के इसमें तो ना लेआउट एक टिपिकल कैसा होता है ना, कि जरूरी नहीं है कि खाना कटोरा भर के या थाली भर के या हीप करके दिखाओ और एक चिंग सेंटर गार्निश करो और वो अच्छा लगेगा करके. हम एक फूड शॉट या एक नॉन फूड शॉट को भी फूड शॉट जैसा बनाकर उसको दिखा सकते हैं. देखो इसमें फूड है ही नहीं, बट इट्स अ गुड लुकिंग शॉट, बिकॉज इसमें द रिक्वायरमेंट वाज टू शो द वेरियस शेप्स ऑफ द प्लेट्स. देयर इज अ क्लाइंट हु वाज ओनली सेलिंग दीज प्लेट्स, उसके लिए था ये. लेकिन अब वो डिनर प्लेट्स हैं, वो चीज बोर्ड है, वो कोस्टर है बड़ा वाला, तो उसको थोड़ा तो फूड एलिमेंट आना ही पड़ेगा ना, थोड़ा कलर, थोड़ा डिजाइन एलिमेंट. दैट इज व्हाट वी डिड. सो देयर इज oregano, there's a nice teardrop cherry tomato, and there is some chives. We just keep it. It's a nice Italian setup we created. ये देखो, that was black on black and this is white on white. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप सेम कलर यूज करोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा लग सकता है. आपके दिमाग पे, आपके इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे दिखाते हो.
So here we played a little more. We made a salmon mousse. उसके ऊपर हमने fish eggs रखा, caviar. This is smoked salmon. Rocket lettuce है थोड़ा, olive oil है, olive leaves है. Olive leaves भी मिल गया बॉस. वो cheat है. That is a sprig which looks like olive leaves. और वह यहाँ बाहर ना सब मिल जाता है. बॉम्बे, आरामनगर है. So it's like that. But at the end of it, the shot looks good. The shot is perfect. उसमें वो client के वो अचार की बर्नी भी दिखाई दे रही है वहां पर, उसका ये लेडल दिखता है, उसका प्लेटर दिखता है, सब कुछ दिखता है. They are all, the client was very happy with these imagery. Finally, हम आते हैं the change. ये कब हुआ? ये change of from analog to digital, from non-availability to availability, from cheating to reality, ये कब हुआ? बहुत slowly हो गया और वो actually पता भी नहीं चला. There are 2-3 things जो मैंने ढूंढ के निकाला कि इसकी वजह से ही वो ज्यादा multiply हुआ into what the right now the industry of food photography is about. So बहुत सारी कंपनीज इन्होंने डिसाइड, इनको पता चल गया, 2 चीज पता चली. मैं बताती हूँ 2 चीज. एक तो खाना टेस्टी बनाना बहुत जरूरी है. मेरी माँ की रेसिपी और मेरी नानी की रेसिपी से नहीं चलेगा. आपको फूड टेक्स लगेंगे जो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो खाने को वो नूडल या वो पुलाव, रेडी टू ईट, पोहा, उपमा वो बनाएंगे. आप उसको बार बार टेस्ट करोगे, उसका स्केल अप होगा और उसके बाद ही वो खाना टेस्टी होगा बार बार इन एवरी बैच. स्टैंडर्डाइजेशन, SOPs on in place, or your HACCP certifications in place for your manufacturing unit, all of that. जब ये सारे rules and regulations हमारे पास आ गए, तब clients को पता चल गया था कि दो लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है उनको अगर फूड बेचना है. एक तो बहुत अच्छा फूड टेक और एक बहुत अच्छा फूड फोटोग्राफर. फूड टेक जो खाना अच्छा बनाएगा और फोटोग्राफर जो खाना अच्छा दिखाएगा. क्योंकि मैंने बोला था ना, फर्स्ट सेल मेरा, सेकंड सेल तुम्हारा. सेकंड सेल इज बिकॉज इट इज टेस्टी, बिकॉज यू मेड अ टेस्टी प्रोडक्ट. बट फर्स्ट सेल विदाउट टेस्ट, आवाजच येणार. हाँ, So nothing, go ahead. I thought she can't do. And the first sale without tasting, I guarantee with my food shot. Repeat sale वो आपका लुकआउट है, वो तुम देखो. अच्छा बनाया है तो बिकेगा, नहीं बना अच्छा तो नहीं बिकेगा. It's like that. Second very important point which got the change was modern trade. Now वो बनिए की दुकान नहीं है जहाँ पे आपने बोला कि एक एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला दो, उसे ड्रॉ खोला, टेबल के नीचे उसका ड्रॉ है, वो खोला, अंदर से निकाला, दे दिया. ऐसे नहीं होता. आप तो जाकर ब्रांड भी नहीं बोलते हो, पहले नहीं बोलते थे. गरम मसाला दे, उसके पास में अंदर ड्रॉ के अंदर जो पूरी थी गरम मसाले की वो दे देता था, ऐसा. बट मॉडर्न ट्रेड चेंज द फेस ऑफ कंज्यूमर्स बाइंग फूड. You could walk into a place. अभी तो यहाँ पे 10 by 10 की खोली भी has become a supermarket. That's different. But at least you can walk up to it. You can see all the brands of the same product. क्या क्या competition में है. तुम, the choice is yours. आप वो गल्ले पे जो बैठा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं हो. आपके मॉडर्न ट्रेड में you start deciding. You started deciding. How did you start deciding? How did you start? Basically, आपने देखा ये प्रोडक्ट है, या अरे यार कितना गंदा लग रहा है ये फोटो, यार शी, ये कैसे खरीदूं मैं, ये बिरयानी तो लग ही नहीं रही है, इसके प्रोडक्ट से पता नहीं कैसे बनेगी बिरयानी, जाने दो. हाँ ये वाला प्रोडक्ट है ना, हाँ ये पैक पे ना देख बिरयानी का फूड बिरयानी अच्छी लग रही है, इसको लेकर देखते हैं. दैट इज हाउ यू स्टार्टेड बाइंग. क्योंकि फूड दिखता था वही बिकता था. गुड लुकिंग फूड दिखा, पब्लिक ले लेती थी. सो मॉडर्न ट्रेड हेल्प्ड अ लॉट इन चेंजिंग द एंटायर scenario. And of course internet, more awareness, more visibility, more knowledge worldwide. कहाँ कहाँ क्या क्या मिलता है, क्या क्या बिकता है, उस तरीके से आपने finally the whole change. Actually food photography and styling has done a 360 change. पूरा उलट हो गया है.
पहले हम लोग जो किया करते थे, हम वो पूरा का पूरा स्क्रैप ऑफ करके पूरा नए तरीके से अपने लिए एक सेट स्टैंडर्ड्स बना के रखा है। अब जो पहले होता था अब वो होता ही नहीं है, और हम हंसते हैं, अरे तू अभी भी वही कर रहा है, अभी तू अभी भी फेक आइसक्रीम शूट कर रहा है, काय के लिए? यू डोंट नीड टू, we always shoot real ice cream. It's like that. So the change has happened. It has happened over last 20 years, but surely it has happened. It's like that. People go more for natural stuff and generally. Now this is a very good example of how we create a scene. Okay. ये ऐसा लगता है ना कि बाहर लॉन में रखा हुआ है, घास उग रही है, घास पे ऐसी ड्यू ड्रॉप्स हैं पानी के, वहां पर एक क्रेट भर के हमने अमरूद पिक किया था और उसमें से हमारे पास में एक जूस का डब्बा है, राइट? या ये 4x4 के टेबल पे पूरा शूट हुआ है. सो यू क्रिएट द मूड, यू क्रिएट इट कि वो सनलाइट लगेगा आपको. इवेंचुअली मेरे क्लाइंट ने ये ITC बी नेचुरल ने ये वाला शॉट जो है इसका होर्डिंग बनाया था, जिसमें पीछे जो व्हाइट टैप को दिख रहा है ना, उसको पूरा जंगल बनाया. दे पुट अ जंगल का इमेज आउट देयर. सो इट ऑलमोस्ट लुक लाइक इट इज अ ह्यूज जंगल और उसके सामने एक लॉन है, लॉन में अमरूद फ्रेशली पिक्ड रखे हुए हैं. इट्स लाइक दैट. दिस इज ऑल डन ऑन दिस वेरी टेबल, ऑन दिस वेरी टेबल. दिस शॉट, ये वाला, it's all done on this very table. Everything happens here. That is creating a mood when it doesn't exist. Now एक बहुत important चीज आ जाती है जब क्लाइंट अवेयर हो जाता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो अच्छा दिखना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा दिखेगा तो वो अच्छा बिकेगा. तो एक नया वर्टिकल खड़ा हो गया था, पता है उन दिनों, about 20 years back. नया वर्टिकल ऑफ डिजाइनर्स who would design as per your requirement, who would design your pack, your packaging, your box, Kellogg's का डब्बा, Cerelac का box, everything, all of this, the whole new breed of designers that came into existence. I coordinate very closely with these designers. I get along very well with them. So like सुधा जो है वो बहुत ज्यादा फॉरवर्ड थिंकिंग है. वो अगर नया रेसिपी भी डेवलप करती है तो वो फूड फोटोग्राफर स्टाइलिस्ट से भी बात करती है कि सबा ये किया है, ये ठीक लगेगा ना, या इसको लुक के लिए कुछ ऑल्टर करना चाहिए करके. इट्स लाइक दैट. इट्स सिमिलरली डिजाइनर्स मुझे कॉल करते हैं और वो पूछते हैं कि ये हमारा ये डिजाइन है, इसमें आपको लगता है आप जो फूड शॉट डालोगे वो पैक को जस्टिफाई करेगा? कितनी बार ऐसा होता है कि इतना बड़ा बॉक्स है, उसमें इतना छोटा सा बोल ऑफ नूडल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या बेच रहे हो, क्या दिखा रहे हो? आई ऑलवेज फील that's like such a defeated purpose. So always अपना फूड है, फूड कैन बी मेड टू लुक वेरी गुड. पीपल लव, इंडियंस लव टू ईट. जस्ट शो योर फूड नाइसली और वो बिकता है. स्पेशलाइजेशन आ गई. पहले एक फोटोग्राफर था, वो ताजमहल भी शूट करता था, सीशोर भी शूट करता था, लद्दाख भी जाके शूट करता था, माधुरी दीक्षित को भी शूट करता था, आपको मेरे को भी शूट करता था फोटो, और फूड भी करता था. So they would do landscape, they would do architecture, they would do people, they would do food, they would do liquid, everything. But later on you realize that especially in food photography, the photographer needs to know the food. There is no compromise on that. So a good cook can become a good photographer. That's a given. क्योंकि उसे उसको खाना मालूम है, उसको पता है वो उसको कैसे रखना है, या वो कहाँ से लाइट करेगा तो वो लेटिस पे बैकलाइट आके वो ग्रीन ग्लो करेगा, या वो चीज ग्लो करेगी. यू नो, राइस को बैकलाइट करोगे तो उसका हाईलाइट अच्छी दिखती है, व्हाइट के ऊपर व्हाइट दिखाई देता है. इट्स लाइक दैट. इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड, स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड साइंस, बट वो आ जाता है. आप उसके अंदर घुस जाओगे तो कुछ भी आ जाता है. लोगों की ब्रांड अवेयरनेस बढ़ गई. आपको पता था कितने टाइप के, कितने ब्रांड के गरम मसाले मार्केट में मिलते हैं? आज से 20 साल पहले आपकी मॉम को पूछो, उसको खाली एवरेस्ट मालूम होगा, MDH मालूम होगा, बस. 100 से ज्यादा को तो की पैकेजिंग तो मैंने शूट की.
100 से ज्यादा पक्का, विदाउट इवन थिंकिंग आई कैन से दिस। सो उतने तो ऑलरेडी गरम मसाले मार्केट में अवेलेबल हैं। सो ब्रांड अवेयरनेस स्टार्टेड हैपनिंग, पीपल स्टार्टेड एसोसिएटिंग अ ब्रांड विद देयर फूड शॉट, विद देयर लेआउट। लाइक आपको पता है कि एक बोल, व्हाइट बोल में कॉर्नफ्लेक्स रखा है और दूध का स्प्लैश आ रहा है, वो केलॉग्स का ही डब्बा होगा, करेक्ट? दैट बिकम्स योर सिग्नेचर एज अ ब्रांड, यू स्टार्ट गेटिंग आइडेंटिफाइड। आपका पैक आपको ज्यादा आपको ब्रांड बिल्डिंग कर रहा है, ब्रांड पैक नहीं बना रहा, पैक ब्रांड बना रहा होता है। आजकल वो हो गया है, विजिबिलिटी इतनी सारी हो गई है, सारी चीज यहाँ पर फोन पे दिखती है। क्या प्रॉब्लम है? सब कुछ नजर आता है यहाँ, पूरी दुनिया हमारे पास है, हमारे हाथ में है अभी तो। सो देयर इज मोर विजिबिलिटी, देयर इज मोर ब्रांड अवेयरनेस, design cells have evolved. So food photography styling obviously has just gone ahead. It's become a bigger form. थोड़ा दिखाती हूँ images, so मेरा नॉर्मल फिलोसफी मेरी लाइफ में हमेशा रहती है कि जितना भी हम आर्टिफिशियली उसको टचअप करने से अवॉइड करें, फूड शॉट वैसा होना चाहिए। तो अभी आप जितने भी इमेजेस यहाँ पर देखोगे, ज्यादा नहीं है, थोड़े ही है, उसमें फोटोशॉप नहीं किया गया। इट इज द वे आई शॉट इट, इट इज द वे आई स्टाइल्ड, लिट, प्रॉप्ड एंड शॉट इट। ओके, दैट्स व्हाट इट इज। अगर आप देखो ये तो, अगर हमको एक मसालेदानी बनानी है, टिपिकली मसालेदानी गोल होती है या स्क्वायर होती है, क्यों रेक्टेंगल क्यों नहीं हो सकती? व्हाई नॉट? इट्स लाइक दैट। तो वो ये हमने बनवाई, इसके अंदर भरा, क्लीन किया। ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये स्मज हो गया, कचरा, ये डाला है। इट इज पर्पसली डन फॉर इट टू लुक स्लाइटली मेसी, स्लाइटली अंडरडन। इट्स लाइक दैट, बट इट इज, everything is by design, everything has been kept so that it looks complete and looks ऐसे जैसे ले, ओ नीचे एक छोटी सी मुट्ठी भर के हमने अक्खा धनिया वहां पर रख दिया, ऐसा वो रखा नहीं है, वो एक एक धनिया को प्लेस किया है, बट वो ऐसा लगेगा कि वो ऐसे आपने मुट्ठी भर के डाल दिया वहां पर। उसको स्टाइलिंग बोलते हैं। उसको दिखाना, मुट्ठी भर के अगर आप उस पर डालोगे टेबल पर और छोड़ दोगे तो वो कैसा दिखेगा, वो वैसा दिख रहा है राइट नाउ, लेकिन वो एक एक दाना रखा गया है। That's how it is. To create a particular mood on what you're doing, how you're doing it, look here. Now, ये वाला जब मैंने शॉट किया था, ये एक रेस्टोरेंट ओनर के लिए किया है हमने, बैंगलोर में। या बैंगलोर में वो रेस्टोरेंट है, उनके लिए किया था। ये आप कैन समबडी गेस ये क्या है, ये डिश क्या है? बताओ। कढ़ी। या ये गोलू गोलू क्या है? ये कोफ्ता तो नहीं लगता। Pumpkin. ये कैरी है, वडू मैंगो, वडू वडू, कर्नाटका का वडू। एक मिनट, अरे म्यूट। ये वो मैंगो है, अक्खा आम है, ये इतना छोटा छोटा, क्लाइंट ने भेजा था। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, द थीम दैट आई गेव टू द क्लाइंट, टू माय क्लाइंट वाज दैट सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है, आप देख लो, सिवाय फूड के। दैट वाज द थीम वी डिसाइडेड। एवरीथिंग, द नैपकिन, सब ग्रे टोन्स है। ऐसा लगता है कि पूरा शॉट ब्लैक एंड व्हाइट में शूट किया और बोल और प्लेट को अलग से शूट किया है, ऐसा नहीं, एक साथ ही शूट हुआ है, लेकिन द वे वी प्रॉप्ड इट, एवरीथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट एक्सेप्ट फूड। सो व्हाट हैपेंस इन दैट, आप बाकी का कुछ देखते ही नहीं हो, आप सिर्फ फूड देखते हो, आपको सिर्फ वो कलर ही और वो पॉप दिखाई देता है। ऑफ कोर्स इट इज वेल मेड, इट्स जूसी, इट इज गॉट द proper glaze, it is nicely lit, all of that is fine, but yahan you target it, you force the consumer to only see what you want to show.
It's like that. Same thing अगर यहाँ देखो, same. Background, napkin, plate, सब shades of grey. Food खाली color. ऐसा है. See here. अब ये शॉट खराब कैसे होता है मैं बताऊं? जब आपका टिपिकली आपका क्लाइंट बोलेगा ना, सबा एक काम करो ना, वहां पर एक वुडन बोर्ड भी डाल दो ना, अच्छा लगेगा. ये वो खराब हुआ है कि ये वुडन बोर्ड में जो क्लाइंट ने बोला उसको चाहिए, तो उसको तो ये वुडन बोर्ड पे ये फिश फ्राई चाहिए था जो मैंने दिया नहीं. It's like that. Aisha. It's that. So yeah. Similarly, wooden bowl. मेरा बस चलता तो मैं wooden bowl use ना करती. It's like that. Now we'll come down to what is styling in video. अब तक का हमने food photography और styling देखा. Now food videography and styling भी तो एक चीज है. Yeah. Sudha, just hang on. Give me a minute. I have to speak to Sadiq. Sorry. So, Ma'am, yeah. hello. Yeah. Ma'am, Disha speaking. Yes. Ma'am, I have a doubt. Now you said that nowadays only real photography is done with the original content or with the original food. But then I wanted to ask now if there's munch chocolate that we get, and the photography is done of the munch. So when you see in the photograph, it is thick and nice and has much layers and looks like it is big and wide. But when you purchase it and see it in the reality, it's not that thick as it is shown in the photograph. So I wanted to ask, is it Photoshop or do you just customize the product like that to show it in the photograph? Okay, very good point, Disha. What happens when you have these kind of products, Kit Kat, Munch, Dairy Milk? Okay, we fabricate it. We make it. We actually do a 3D printing of the entire product. और हमको बताया जाता है कि उसका जो अंदर का कैरमल, गुई कैरमल ऐसे देखना है, तो फिर हम उसके अंदर उस तरीके से वो कैरमल डालते हैं. It's like that. वहां पर डाल के फिर उसको शूट करते हैं. But the only thing what we do, no, Disha, in that, which the client has to take care, because food safety laws are quite good in India. Otherwise, you cannot overcome it. आपके प्रोडक्ट में अगर 10% परसेंटेज वाइज होता है, 10% कैरमल है, तो उस एंटायर शॉट में कैरमल 10% ही दिख सकता है, ज्यादा नहीं दिखा सकते आप. इट्स लाइक दैट. अगर पीनट्स आपका 20% है, या आपको उस आपका रेडीमेड पोहा है, उसके अंदर आप 4 या 5 पीनट्स ही जाता है, 7 ग्राम ही पीनट्स है, तो आप 7 ग्राम यहाँ पे वजन करो और वही दिखा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं दिखा सकते. यू कैन नॉट ओवरकम इट. बट सी फोटोग्राफी से ऑल्सो क्या होता है ना, कि वो मंच आप अपने हाथ में लेते हो ना, इतू सा बार है, करेक्ट, 3 इंच 4 इंच का, प्लीज जोशना को फोन करो, 3-4 इंच का वो बार है. ओके ना, उसके अंदर जो है, अगर आप उसको मैक्रो लेवल पे एकदम, हम लोग क्या शूट करते हैं, 1 इंच का इनसाइड क्रॉस सेक्शन. सो व्हेन यू enlarge that 1 inch का inside cross section into something which is like a hoarding out there, वो बड़ा ही दिखेगा ना, दिशा? Yes, ma'am. It's like that. So what we are doing is we are actually making life-size product to show the same miniature in a larger form. It's like that. Like मेरे पास वो डेयरी मिल्क का क्यूब होता है ना, छोटे छोटे क्यूब्स बनते हैं ना डेयरी मिल्क के, हमारे पास इतना बड़ा डेयरी मिल्क का क्यूब है, 12 इंच का. एक क्यूब 12 इंच का खा नहीं सकते हो, बट that's how it is. So we do those things. I'm not saying that there is zero cheating happening and whatever. And this is not a, and you will see it.
We have visualized it कि वो 1 इंच को मंच को अगर मैं 100 फीट का होर्डिंग पे बनाऊंगी दिखाऊंगी तो विजुअली वो ऐसा दिखेगा. That's creative visualization. It's like that. So yes, it's not even cheating, but it's just making the product look larger than life. Miniature product. Anyways, मेरा तो हो गया है almost. In terms of presentation, if anybody has, we'll just go through some images in terms of what I like. So this typically, Disha, this is real ice cream. This is a real waffle, a real ice cream, real ganache out there, cocoa powder, all of it. This is 100% real shot, which after shooting you can eat. It is very difficult for you to manage ice cream, frozen ice cream, and shoot it real. But you know what? It's not impossible. So it depends on मेरे ऊपर depend करता है कि मैं क्या दिखाना चाहती हूँ. मुझे safe, easy method लेकर mashed potato का वहाँ पर scoop बनाकर डाल देना है, या मुझे अच्छा melted real ice cream दिखाना है. A lot of it also, you know, this everybody guys, a lot of it depends on your personal aspect, your personal benchmark. आपने अपना benchmark कहाँ पे set किया है? मेरा तो 25 माले के ऊपर है. मुझे मेरे ही शॉट सबसे ज्यादा गंदे लगते हैं बनाने के बाद में. It's like that. So I am on a constant thing of improvising, improving, learning, imbibing, applying. It's like that. So वहाँ सब कुछ आकर अटकता है कि आपने अपना बेंचमार्क कहाँ पर सेट किया. It's like that. See this. So this is actual raspberry syrup, पीछे actual vanilla beans, सब real. अभी ये शॉट देखो typically. This was shot, Sudha, this is for Bell. Yeah. This, Wow. yeah. Now this one, can anybody guess कि ये cups कितने बड़े या छोटे हैं? मुझे कोई ballpark guess बता. 2 inch. These chocolates, these are truffles. ये truffles, इनका size, इनका actual size क्या बताओ? Guess कर सकते हो आप? 2 inch. It is just 1 inch. वो जो पीछे ग्लास है ना जिसमें विस्की जैसा लग रहा है आइस क्यूब के साथ में, that is a tea light candle holder. अरे इतना छोटा सा वो टी लाइट कैंडल होल्डर है, इतू सा, जो right now looks like a whiskey glass. छोटे छोटे डिस्क है ना, वो 1 inch by 1 inch के, 1 inch diameter round, 1 inch square. We got it done for the shot. But again, this is like Disha, this is very similar to your munch thing. कि आपको पता नहीं आप कितना मिनिएचर को कितना बड़ा देख रहे हो. अभी इसी का अगर मैं होर्डिंग बना दूं तो आपको लगेगा ये कपकेक का साइज है. कम से कम कपकेक का साइज तो लगेगा, लेकिन वो एक्चुअली 1 ही इंच है. मैंने उतना क्लोजअप में उसको शूट करके दिखाया है. राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट. सी, ये चॉकलेट बहुत सेक्सी है यार सुधा. Their janduya is awesome. It's to die for. It is to kill for. I can kill people to get this. Okay. Piri piri French fries. गंदा प्रोडक्ट, खाने में भी नहीं अच्छा लगता मेरे को. सुधा ने बनाया है. We shot it for McDonald's, but client wants it. What do? You make it, and you make it look good. Not to yourself. It has to look good according to his expectations. It's like that. So always, I mean, आपको पसंद आए ना आए, it doesn't matter देना. अपने client को पसंद आना चाहिए. अगर आप अपने personal काम कर रहे हो, तो yes, you have to be happy with your work. But at the end of it, somebody needs to sell this. Somebody needs to find the image worth selling. It's like that. So you have to work around that.
neatly arranged to look disarranged. That's my favorite line. Things have to be neatly arranged to look disarranged. Like मैंने बोला ना वो धनिया, उसको एक एक दाने को इस तरीके से रखा कि वो ऐसा लगा जैसे हमने ऐसे डाला है. ऐसा नहीं लगा कि गोल सर्कल में बना के फूल पंखड़ी बनाई है उसकी, वो नहीं दिखाई दिया. It looks disarranged. It looks like it has been casually kept, like ऐसे, you know, but it's not. It's very neatly done to look casually kept. ये शादी गजल का किसका? That's what it is. Your work shows your personality. आपका काम आपको डिफाइन करता है. That's like a life lesson. आप जिस तरीके से हो वो आपके काम से झलकेगा. Your perfection, your madness, your OCD, obsessive compulsive disorders, वो सब आपके काम में नजर आता है. There are so many times when there are people, my friends, people like Sudha, वो लोग काम देखने के बाद मेरे को फोन करके बोलेंगे ये तूने किया ना. It's like that. वो सिग्नेचर आ जाती है, वो छाप आ जाती है. इनफैक्ट कितनी बार सुधा मैंने भी सोचा है कि यार इतना रेपिटेटिव हो गया कि लोग को देख के मालूम पड़ रहा है ये मेरा है, मेरे को चेंज करना पड़ेगा. You know, that's what it is. I mean, for me it's like I have to change. I can't be so predictable. Let's change. सब बदल दो वापस. It's that. So your work shows your personality. Always keep it rule worthy. बस personality हो या काम, keep it rule worthy. है ना सुधा? देखो गरम मसाले को, एक ही चीज को, तो मेरे पास में ना सुधा, देयर आर पीपल हु कम टू मी, किड्स, मैम मेरे को फूड स्टाइलिंग करने का है, मैं केटरिंग कॉलेज जाकर आया, हमको फूड स्टाइलिंग सीखने का है, हमको फूड फोटोग्राफी करने का है. मैं तो वही बोलती हूँ, एक प्रोडक्ट लो, राजमा और राजमा या दाल मखनी, कोई एक प्रोडक्ट लो और 20 अलग तरीके से उसको शूट करके मेरे को दिखाओ, स्टाइल करके दिखाओ. एक ही प्रोडक्ट को बार बार लगातार, एंड दैट इज योर टैलेंट, बिकॉज दैट्स व्हाट आई डू. गरम मसाला, मैंने अभी तुमको बोला 100 से ज्यादा ब्रांड होंगे मार्केट में जिनका पैकेजिंग हमने शूट किया है, सब अलग. देयर इज नो टू ब्रांड व्हिच विल लुक अलाइक in terms of lighting, in terms of setting, styling, anything. Food same hai to bhi. It's like that. So that is important. You keep innovating and reinventing yourself. Make the same dish look good again and again and again. रोज सुबह में जाके बोलने का आज दाल मखनी बनाती हूँ और स्टाइल करती हूँ. रोज सुबह, can you believe it? पूरा साल रोज सुबह दाल मखनी बनेगी, शूट करो. दाल मखनी बनाओ, शूट करो. बिरयानी बनाओ, शूट करो. बिरयानी बनाओ, शूट करो. इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज एट द एंड ऑफ इट आपका एक ये भी होता है ना, कॉन्शियस होता है कि आप सारे कंपटीशन का शूट कर रहे हो. आप किसान केचप भी शूट करते हो, मैगी टोमेटो केचप भी शूट करते हो, हाइंस केचप भी शूट करते हो. सबको तीनों को फ्रेंच फ्राइज ही चाहिए. आप कैसे तीनों को सेम शूट करके दे सकते हो? यू विल हैव टू बी डिफरेंट बिकॉज दैट इज your responsibility, not theirs. It's your job. It's my job to make it look different, all three of them. So what if it is french fries? So what if it is in a box? So what if it is on a same angle? So what if it is on a white background? सब same है लेकिन अलग दिखना चाहिए. ऐसा है. That is important. Keep reinventing, keep changing. There you are. garam masala. देखो, this is a soup for kids. This was one client, he was going to launch ready to eat soup. तो ये बच्चों का सूप था, मैकरोनी, टोमेटो मैकरोनी सूप एंड व्हाटएवर. तो दैट्स व्हाई हमने इसके यहाँ पे थोड़ा सा प्लेफुली ये सब किया था. वी मेड लाइक, वो क्या है तुम्हारा एंग्री बर्ड ना, ये वो एंग्री बर्ड के जैसा किया. गाजर को इस तरीके से काटा, मेड इट अ लिटिल मोर प्लेफुल. सो नीचे डॉयली पेपर भी है, बच्चों के लिए अच्छा है, कलरफुल है, ब्राइट है. सीरियस टोमेटो सूप, हार्डकोर. अब कितनी बार टोमेटो सूप शूट किया यार, लेकिन अलग तो करना ही पड़ेगा ना हर बार. दैट्स वेयर इट इज. स्पिनच सूप, मशरूम सूप,
angle same, properties almost same, but it has to still look different. This is I think it's a Thai noodle soup. So my line earlier, it used to be, as a company I used to say food photographics mera company hai, food.looks.good. That was my line. Now it has become, it better look good. That's what it is. अभी तुम बताओ यहाँ से क्या 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 तुमने देखा? Have you all understood what I spoke? समझा आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, I had one doubt. Please. Ma'am, what do you think are the most 3 important things if you want to start food styling or photography? You need to know food. You need to have aesthetics. And you need to know photography. आपके पास में एक एस्थेटिक सेंस होता है जो हम अक्वायर भी कर सकते हैं बाय रेफरेंसिंग, बाय स्टडिंग, बट दो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, विच इज फूड, नॉलेज ऑफ फूड एंड नॉलेज ऑफ फोटोग्राफी. ऑब्वियसली एज अ फूड टेक यू विल हैव नॉलेज ऑफ फूड रीजनेबली, काफी अच्छा. बाजू वाली हाउसवाइफ से तो डेफिनेटली अच्छा, बट डू यू नो फोटोग्राफी? डू यू नो हाउ अ कैमरा वर्क्स? डू यू नो व्हाट ऑल इज पॉसिबल? That is important. So food, photography, and aesthetics. That's what it is. हाँ. सुबह 6 बजे तक. Were there any other questions anybody had? And I would like to just ask while people think and they write on the chat. Just for the benefit of the students here today, because all of them are food technologists, ready. I think most of them are in their final year, ready to go out in the world. So my journey with Saba was interesting because Saba, she just showed all the photographs. It looks simple, but उसमें बहुत मेहनत जाता है. And she would keep pushing and asking कि ये burger patty अगर shoot करना है, and you know, we would get this patty from the supplier, and Saba would say, she would look at the product and she would say, पर सुधा ये shoot करते समय ये oil दिखेगा, these crumbs will not look very good, can you get me some extra crumbs and can you show me how you all do this, because then I would like to replicate it. So she would actually further replicate it, and again, as she said, it would not, I mean, the crumbs will not look इतना ज़्यादा कि वो actual product में जितना है उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए. And that's where, as a technologist, I would play with her saying, अच्छा Saba, let's try this way. इससे कम आएगा, इसको कम cook करते हैं. And it was a great process for me as well to learn. But what it definitely told me as one key quality a food stylist has to have is, as Saba said, definitely the knowledge of food. You need to know how the food behaves, but you have to be a perfectionist. You have to be absolutely patient. You cannot lose. I've never seen Saba in that 8-hour shoot ever losing कि यार ये धनिया क्यों नहीं खड़ा रहा है? You know, why is it not standing? She'll figure out ice में डालो, किस में डालो, but वो धनिया green, and इतना धनिया लेके आके इतना सा धनिया को shoot करते थे, because you are searching with a forceps to see which one will represent the brand plus make look good. And also would want to share this, that she had these special chemicals. I don't know if you still use it, but live ads is also what Saba does. This is only still photography that she's shown, but a lot of real live ads of food she's done. I don't know if she can show some video to show that, but जहाँ पे धुआं निकलता है, you know, गरम patty fry करके डाला, पर by the time the camera is shooting and lens and all that, वो धुआं तो continuous रहेगा नहीं ना. So she had figured out this stuff that she would call chemical A and B, that she would put on it
just when the photographer is good for shoot, and वो ऐसे beautiful सा धुआं दिखता था. I don't know if you still do it, but also using all these gimmicks. And the other thing of pizza में अगर you know smoke दिख रहा है, somebody would be smoking there on the side and so a lot of such things as well. Yeah, like chemical ना भूल गए तो क्या करेंगे? A और B है ही नहीं. So now you go to Z. Last resort is cigarette smoke. Correct. Yeah, I'll show some videos. I do have it, but I just want to take some Q&A if these kiddos इनके पास कुछ है doubts. गौरी नाथ, तुमको अगर फूड फोटोग्राफी में जाना है, मैं तो पहले तो तुमको डिसाइड करना पड़ेगा. You want to do food photography or you want to do food styling? बहुत डिफिकल्ट है दोनों साथ में कर पाना. मैंने किया बट मुझे 25 साल लगा बहना. If you are ready to give 25 years, you will come here. You will reach this place. But you'll have to be able to give 25 years. If you are prepared for that, sorry. So decide. So मेरा भी the journey was the same. I was just a food stylist earlier. Then I got into photography. Then I got into video making. But वो step by step process होता है. You will have to be ready for that. आप decide कर लो कोई एक. You should be okay with that. You can pick up something there. क्या रे बच्चा लोग, कुछ पूछो, कुछ बोलो. Hello, ma'am. Yes. Pritam this side. I want to just ask if consider I want to take a picture at home itself. So in these pictures backdrops तो थे ही, they are wooden backdrops. But अगर वो change करना हो, like घर में जो भी है उससे अगर pictures click करना होगा तो what we can replace other than these backdrops? No, अपनी खिड़की के पास, आपके घर में खिड़की होगी, right? You'll have a window, right? Yeah. Keep the food on the window where there is no direct sunlight. Direct sunlight आ रहा होगा तो मत करना, शूट ही नहीं करना. Direct sunlight को cover करना होता है. But window पे रखो, on the window sill, window ledge. आपके घर में ट्रे होगा, ट्रे ले लो. बड़ा प्लेट होगा, प्लेट ले लो. व्हाइट प्लेट हमारे घर में अक्सर होती है. There is no hard fast rule कि वो वही प्लेट होना चाहिए, वो वुडन टेबल टॉप पे होना चाहिए. कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं. फूड दिखाना है ना, बाकी का सब पैराफिनेलिया है, एक्सेसरीज है. Yeah. शक्ल अच्छी होगी ना तो बाली नहीं भी पहना होगा तो चलेगा. समझे आप? That's what it is. Saba, is there a professional course which someone, you know, anywhere worldwide, which teaches, you know, how to make food look good? Like, you know, I wish that they have these courses. वो सिंगापुर में 2 दिन का, और पेरिस में 1 दिन का, 1 day, like a workshop, but nobody teaches you. And you know what, Sudha, this is such a highly closed profession. यहाँ पर जो भी होता है ना, कोई शेयर नहीं करेगा. जो आप कर रहे हो, आपने अपना दाल मखनी बनाने में वो राजमा को कितने घंटे पकाया, या पकाया भी कि नहीं पकाया, वो जो किया, वो जो it's not even trick. These are formulas. Nobody will share that formula. You will have to make your own formulas. You'll have to work and create your own formulas. Have your own formulations. It's difficult. The other best, the next best option is to work under someone. That's it. That's the, yeah, that's at least the फिर उसमें भी ऐसा नहीं है ना कि मुझे किसी ने बोला था ना, मैम आपको स्टूडियो में मैं आके बैठ के खाली आपको काम करते हुए देखूंगी. क्यों? Why will I allow that? You better be working. और 2 महीना मैं आपको काम करते हुए देख के then I will become a food stylist. Why? And how? Like it has taken me so long to reach where I have reached. तुम 2 महीने में सीख जाओगे सब कुछ? Is that even possible? So important with you girls, very important is, पता नहीं आजकल की जनरेशन में पेशेंस नहीं है सुधा. उनको सब चीज एकदम ऐसा फटाफट चाहिए. स्टार्टिंग किया, पैसा चालू,
नहीं होता है. You have to have patience. You have to learn. It's a new profession. Sadly, उसका कोई कोर्स नहीं है बहना, तो किसी के साथ में काम करके सीखो. It's like that. किसी के साथ काम करके सीखो सीखो सीखो. 5 साल तो दो. मैंने 10 साल 15 साल लगाया, तू 5 तो लगाएगी. If you are like 3 times better than me. Exactly. Yeah, that's true. So I guess what Sabha is trying to say to everyone is, I guess, like she mentioned to someone, that every product that you make or you are creating, take your, try shooting it in different ways and play with food. And because all of you all are food technologists, obviously you know how food behaves, how it should look, how it should feel. It's not new to you. And with basic aesthetic sense, if you have, I don't think aesthetic sense is something that can be trained. It is inherent. You can refine it, but that inherent quality, if you have little understanding on photography, ki light kahan se aata hai, kahan dark hota hai, kya hota hai, and you can develop these skills. That's what she's trying to say. And obviously work with someone as a support, where you can see the amount of hard work that goes in creating that magic on the plate. Are there any other questions, girls? This is the time right now. If there are any questions, if you want to know anything more about food styling or photography, Sabha is happy to answer. Ma'am, it is so much inspirational to see how beautifully you have represented it. All of your experience in just an hour. And I must say, being a 18-year-old, it really helps to, listen to such an inspirational person to look forward in life. Sabha, you're on mute. As always. Always. Okay. So this is a video so I've gotten into food videography also, not just photography, where I decide what shots to do with that new product and how to shoot it and how to set it up and what will be the action and what will be the reaction and everything. ये पूरा film मेरा है. Just see, client was very happy with it. It's for Domino's. Have a look, girls. Wow. Did y'all hear it? No, your voice was off, I guess, when you started it. No, it is gone onto my headphone. ये वाला देखो. So this was a very nice ad. यहाँ पे this was for Diwali, and we have created the entire thing with Diwali sounds. पटाखे के sounds हैं, but food बन रहा है. और इसके लिए to create पटाखे का sound, we actually recorded the live sound of the food. Chopping ka, knife ka, peppercorns falling, tadka, frying puri, everything we recorded the sound and then we placed it into the ad. Nice. Just listen अब इसको सुनो. Wow, simply beautiful. खाने का मन कर रहा है. इसका line बड़ा अच्छा था. Let your favorite food make the only noise this Diwali.
just cook. But this ad did very well for them, for the client, for Nilons. They had put it up for awards and things like that. Please. Beautiful, beautiful. Yeah. सुधा, Yes. ये वही धुआं है. मैं भी बोलने वाली थी, ये धुआं तो वही लग रहा है. वही है. Acha Saba, in the Domino's ad, you could see the chicken coming, the seasoning just getting splashed on it. So was the chicken hung on a string, or how is it like? Or is it somebody holding and then you blurred off everyone? Okay. So you actually get movement. We get movement, and the powder is actually the Joel, right? Sudha, my friend, Joel. Yeah. हाँ, तो वो वहां से कोई चिकन फेंकता है, यहाँ से जोएल पाउडर मारता है उसको. And we shoot the middle part. So it has to be so perfect. Oh and yes. you have multiple shots at least. Oh yeah, of course. 100-200 तो चिकन फेंके रहेंगे. आराम से. आराम से. Okay. Yeah, that's precision work, and that is the fun. Yeah. उतना I've seen करना you. है, और वो एक सेकंड के लिए खाली दिखेगा, लेकिन वो 2 घंटा लग जाता है शूट करने. Correct. The amount of, while the shoot is just 5 seconds or 10 seconds or 20 seconds, Yeah. but the amount of product, से कौन क्या फेंकेगा, कौन से लाइन पे रहेगा, कैमरा का एंगल क्या होगा, लाइट कहाँ से आएगा. ये सब फूड जो था निलॉन्स का, मतलब फूड के हिसाब से नॉइज डिसाइड करना था. करेक्ट. हमको पहले तो उनका पूरा पोर्टफोलियो इतना गंदा है. पास्ता भी बेचता है, मसाला भी बेचता है, टोस्ट भी बेचता है. हम लोग क्या कर रहे हो? फूड भी बेचता है. सो उसमें से यू हैव टू पिक फूड, प्लस देयर रेस्ट्रिक्शन इज कि हमारे ये बेस्ट सेलिंग है, इससे ही बनाओ. तो उसी से बनाना था. द चैलेंज वाज नाइस. इट वाज लाइक ओके, ये 15 प्रोडक्ट है, इसमें से तुमको जो यूज करने का करो और फूड फिल्म बना के दो. द कॉन्सेप्ट इज कि हमको फूड नॉइज चाहिए, which will create the symphony. It's like percussion, almost like percussions. Yes. Beautiful. To be as creative, to think, to relate to the, बहुत मजा आया. beautiful. That's lovely. If anyone else has a question, or ma'am has any questions, or Saba, I know she's an absolute busy schedule and she's given an hour and a half for all of us. मुझे हुआ जा रहा है कि मैम कब खत्म करेगी शूट. Guys, on the background is her studio, so that's the table where she shoots everything, and the cameras, and the kitchen is where she gets her work done. And the black box has got all her tools. I know that. उस पेटी में exactly. Yeah. And she's also got all these beautiful props, which is these table mats and tables and beautiful stuff that you would use as props. लेकिन यहाँ पे if I can turn, the props are lying on the table out there. जो अभी शूट करना है, we have already selected and kept them out for the job for today's. Excellent. Yeah. Excellent. Thank you so much, Saba. Ma'am, over to you. Really liked it. The girls are a little in awe and speechless. कि ये क्या हो गया? इसीलिए इसको मैं बंद कैसे करूं? Over to you, ma'am. If there is anyone who's going to give the vote of thanks, or hello, दिख रहा है? Am I audible? Yes. Okay. Sapri ma'am, over to you. Saba has finished her session. Oh, there's another question. What editing apps or softwares would you recommend? Photoshop. Photoshop. Yeah. Illustrator है, Photoshop है.
I mean, I will go into the hardcore one. ना मैं तुम्हारे phone पे movie maker पे तो नहीं edit करूँगी. We will, if you're doing it, we'll do it like proper. Like that. Photoshop, Illustrator, Corel Draw. Corel Draw is थोड़ा सा dated, but Photoshop is good. Adobe. Yeah. Great. I don't use Photoshop. मुझे Photoshop का खाली spelling मात्रा आता है. मैं करती नहीं हूँ. मेरे images में जरूरत नहीं पड़ती. बहुत कम जरूरत पड़ती है Photoshop की. But yeah, those people, those designers who use it, they use Photoshop or Illustrator. उसको घर बुला. Okay then, thanks a lot, Anaga. I'm sorry, Sabha, for this beautiful session today with everyone. I think I need a little more interaction with these girls. Yes, they all are a little quiet. They are a little quiet. I understand. You can probably, Sudha, share my email ID with them or my number. Maybe they can WhatsApp. You guys are feel free. Connect with me. Call karo, trouble karo, no problem. Okay. I will share your website as well with everyone. Yeah. I've shared it Yes, with ma'am. I would love to share some pictures that I've already clicked with you. So if I can connect with you through WhatsApp, so I can share my pictures. Yes. Brilliant. I have put my number there. अगर करना है तो आप check it out. You all can make notes and whatever. She's got her number up on the chat. Regardless, I will also send it to everyone via Sapre ma'am, and you can take it from her. Yeah, Also, Sabha has got a great website. Must go. It's just phenomenal. A lot of her shots are there on it to inspire you. Call karo. Y'all can check. Y'all can trouble me. If I have not taken the call, I will 100% reply back. Call back. That's a guarantee. अगर कुछ काम है and if I'm unable to take a phone call because typically नाम नहीं आएगा, I will definitely call back. You can leave a message and you will always get a reply. That's a given. Thank you, Sabha. This was an absolute phenomenal session for all of us. Yeah. Huh? Meeta is there in a student. Meeta, semester 4. Yes, ma'am. Yes, just please give a vote of thanks. Ma'am, this is just a formality actually. You are part of PVP, Sudha ma'am, and along with Sudha ma'am, Sabha ma'am is also part of now PVP. But this is just formalities, yes, we can say. But you are always welcome in our PV Polytechnic family. Sudha ma'am is always there for helping us. So thank you. Meeta, please take forward. I just have to thank Sudha Yes, for ma'am. allowing me to come and speak here. I really have to thank Sudha because I'm so lazy. मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करती अगर ये लड़की नहीं आती. Yes, ma'am. Ma'am, on behalf of everyone here, I would like to thank you, ma'am, for taking time out for us for this webinar and sharing your experience and guidance for food designing. Before this seminar, we did not have any idea regarding this topic, but after the explanation and your guidance, we think most of them would try to explore this field for sure. Why not? I'm doing well. तुम भी कुछ ना कुछ अच्छा कर लोगे लाइफ में यार. Yes, ma'am. So, ma'am, thank you for organizing this webinar, and thank you, Sudha, ma'am, as well. Thank you. Thank you, and bye-bye, everyone. Bye. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.